Hello everyone, welcome to Supremo classes, and in this video I am going to discuss a very important topic, that is a collective bargaining. और कलेक्टिव बार्गेनिंग को हम समझेंगे थ्रू डेफिनेशंस, व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग, मेरिट्स एंड demerits of the collective bargaining. So this video is very important, so watch this video till end, and without wasting our time, let's begin the video. The phrase collective bargaining is coined by famous authors Sidney and Beatrice Webb in their celebrated treatise on history of trade union. जो उनका फेमस वर्क था हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस में, उन्होंने पहली बार कलेक्टिव बार्गेनिंग इस टर्म को यूज किया. Collective bargaining is a method of determining the terms and conditions of employment and settling disputes arising from those terms by negotiating between the employer and employees in their trade unions. Ludwig Taylor states the definition and general nature of collective bargaining in very simple words. That is, a collective bargaining agreement has been variously interpreted, but its essential nature is the subject of general understanding. It may be broadly defined as an agreement between single employer or an association of employers at the one hand and a labor union on the other hand, which regulate the terms and conditions of employment. कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है एक मेथड है जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन द सिंगल एम्प्लॉयर और एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एट द एंड ऑफ वन हैंड एंड अ लेबर यूनियन on the other hand, which regulate the terms and conditions of the employment. So what are the essential conditions of the collective bargaining? Essential conditions for collective bargaining typically include the following things: recognized representative union और organization, जो union है वो organization हो वो recognized होनी चाहिए. A defined group of employees, a willingness from both the parties to negotiate, जो willingly होनी चाहिए, both the parties जो है negotiations के लिए आती है वो willfully आनी चाहिए. a clear agenda and goal, जो भी collective bargaining होने वाली है जिस भी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के लिए, जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, जो भी रीजंस हो वो क्लियर होना चाहिए उसका एजेंडा एंड गोल्स. नेक्स्ट जो है गुड फेथ कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड लीगल कंप्लायंस विद द लेबर लॉज. जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है तो वो किसके लिए होनी चाहिए? लीगल कंप्लायंस विद द लेबर लॉज. नेक्स्ट जो है द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. कौन क्या इंक्लूड है इसमें? निगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव. जो भी निगोशिएशन होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ट्रेड यूनियन के हो या एम्प्लॉयर के हो, तो वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होंगे विद द एम ऑफ रीचिंग एग्रीमेंट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दिस प्रोसेस इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए बोथ द पार्टीज की, इक्वेलिटी बिटवीन द पार्टीज, दो पार्टीज होनी, एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉयज हो, इक्वली ट्रीट होनी चाहिए, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड the pursuit of common goals. The agreements reached through collective bargaining are often legally binding and can cover various aspects such as wages, working hours, benefits and workplace policies. The collective bargaining has also merits and demerits of the collective bargaining, has both merits and demerits. First we see the merits of the merits of the collective bargaining. That is, first is a strengthen employees' voice.
जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है एम्पावर्स एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग देम विथ अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर कंसर्न नीड्स एंड ओपिनियंस कलेक्टिवली लीडिंग टू इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन एंड आल्सो जॉब satisfaction. Next है balance power. It balances the power dynamics between employers and employees, ensuring that the decision regarding wages, benefits and workplace policies are negotiated fairly. Next जो merit है conflict resolution. The conflict resolution, it provides a structured way to resolve conflicts and dispute between the labor and management, reducing the likelihood of strikes and disruptions. नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. जो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करती है. कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रमोट्स ओपन एंड transparent communication between the two parties, fostering a better understanding of each other perspectives and needs. Last जो है merits इसका standardization of conditions. Agreements reached through collective bargaining set the standardized terms and conditions, creating consistency in employment practices across the organization. Next point जो है discuss करेंगे अब हम, that is the demerits of the collective bargaining. Strikes and disruptions. If negotiation break down, it can lead to a strikes, work stoppage and disruptions, causing financial losses for both employers and employees. जो भी strikes होती है उसकी वजह से क्या होता है, वर्क स्टॉप हो जाता है, उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो जाता है. दैट इज द नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी. द रिजिड एग्रीमेंट्स रीचेस थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग माइट नॉट अकाउंट फॉर रैपिड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, हिंडरिंग एडेप्टेबिलिटी. थर्ड जो है पावर imbalance. In some cases powerful unions might exert excessive influence, potentially leading to unrealistic demand that could harm the organization viability. Next है costly process. The negotiation process can be time consuming and expensive, involving legal and administrative costs for both the parties. Next है exclusion of individual preference. Collective agreements might not consider individual employee preferences, leading to situations where certain employees' needs are not met. Next and last demerits है इसका resistance to change. Resistance to new method, that is technologies or operational changes, can arise due to entrenched practices defined by collective arguments. So overall collective bargaining has the potential to bring about positive outcomes, but it also requires careful management to balance the interest of both employers and employees. I hope you understand the collective bargaining term, and thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.